inside. Very good. So the correct answer would be inside. So folly, craziness, glitch. So these are wrong options. We can follow the elimination method to get the correct option. Okay. So that is why the correct answer would be inside. Is it clear? Now go for the next one. So we have next question. Question number 3. So in this sentence, you can go for the next one. This one. So select the most appropriate meaning of the given idiom. A piece of cake. Everybody knows it is very easy and we use it in our daily life. And again I am telling you, this is the examination of 8 September 2024. ठीक है? So लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन पेपर है, इसलिए आप लोगों से बनना भी चाहिए. ठीक है? बताइए फटाफट. Easy to do or achieve. So this is the correct answer. Easy to do or achieve. So this is the correct answer. Let's see. This would be the correct answer. Okay. Now the next one that we have. Move for the next question. Select the most appropriate option to fill in the blank. What would be the correct answer? Civilization. Civilization. Cultural heritage is the lifeblood of any lethargy या फिर birthright, belief और civilization. ठीक है. So we know that जो cultural heritage है उनसे हमें किसके बारे में पता चलता है. जैसे आपको पता ही है हड़प्पा सभ्यता के बारे में सब लोग जानते हैं. ठीक है. आपने इतने सारे फोर्ट वगैरह देखे हुए हैं, लाल किला देखा हुआ है ना, ताजमहल देखा हुआ है. इनसे क्या पता चलता है? जो ओल्ड सिविलाइजेशन था उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. सो दैट इज द रीजन. करेक्ट आंसर क्या होगा? सिविलाइजेशन वुड बी द करेक्ट आंसर. ओके. सो नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट वन. Select the incorrectly spelled word. That you have to tell me what is the incorrectly spelled word. Consistency. मतलब आज की डेट में भी आप लोग एमटीएस निकाल दोगे आराम से, है ना. मैं देखो डेट के साथ बता रहा हूँ आपको, ये पिछले साल के क्वेश्चन पेपर है, तो पुरानी भी नहीं है कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आ रहा. ठीक. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. नाउ क्वेश्चन 7. Select the most appropriate synonym of the word pursue from the given sentence. So what will be the correct answer? What would be the correct answer? Success. Chase. Chase. What is? Pursue. Exactly. If something is happening, so just you have to pursue it. Means you are chasing it. So that is the reason the correct answer would be chase. Got it? It's very easy. Now let's move for the next question. बाकी जो लोग ऑनलाइन है वो भी कमेंट करते जाएं. सबके कमेंट देख रहा हूँ मैं यहाँ. ठीक है. Next. Now in this sentence find out the sentence that have any error. बताओ. Miss Premlata asked Malini to hand down all the payment slips. So what will be the correct answer? Fourth one. So it should not be the hands down. It should be Hand over. hand over. Okay. So then the sentence will be the correct one. Okay. So now we have next option. Move for the next question. So tell me. Following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. Now tell me. This is the sentence and you have to tell me the error part. Fourth one. Fourth one. Discuss everything in great detail. No, fourth one. Fourth one. My secretary is disposed of. It should be OFF. So the correct phrase is disposed of. OFF would be the correct answer. Okay. Now the next question. So the correct spelling would be disposed of. OFF of. Now we have the question number. This one was 9, 10. Question number 10.
Now tell me, please listen to all announcements. So these are the options. There is Attentively. some typing error. So generally, easily, hungrily और attentively. Attentively. होता नहीं होता? जैसे आप कहीं पे ट्रैवल करते हो तो रेलवे से ट्रैवल करो या फिर किसी भी चीज़ से ट्रैवल करो, सो यू नो वेल कि हमें करना क्या होता है, हम यही अनाउंसमेंट होता है ना, ध्यान से सुने. सो अटेंटिवली, लिसन अटेंटिवली. ओके, तो इंग्लिश वाला अनाउंसमेंट सुनना कभी रेलवे स्टेशन पे, ठीक है? तो वो भी ऐसे रहेगा, अटेंटिव होगा. ठीक है, गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, क्वेश्चन 11. ठीक है, इजी है क्वेश्चन, ये मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, और अगर फिर भी आपको लगता है कि सर हमसे नहीं बन पा रहा है या टफ है, so feel free to ask. Now in this blank, just you have to fill the blank with the given options. Third What one. can be the correct option? Third one. Third one. Okay. Listen, he is too tired. मतलब हमने क्या बोला? वो इतना थक गया है कि वो क्या है? वो आगे होमवर्क नहीं कर, फिनिश नहीं कर पाएगा इसको. Got it? Now question number 12. Question number 12. What will be the synonym of energy? Appropriate synonym. Now listen: speed, power, frailty, or strength. These are the options. So can you Power. tell me? Of course, this is very easy. So the correct answer would be power. Is it clear? कितना easy है? बताओ, क्या आपको लगता है कि आपसे नहीं बनेगा? बनना चाहिए, इजीली बनना चाहिए. ठीक है. Now we have the next question. बताओ. The following sentence has been divided into 4 segments. One of them contains an error. Select the segment that contains the error. Neither Smith nor Rose were in the classroom. क्या आंसर होगा? जल्दी से बता दो. सबको पता है आंसर क्या है इसका? इजी भी है, It should be was. है ना? चलो देखो फटाफट सब लोग आते जा रहे हैं ऑनलाइन, है ना? हाँ, क्या होगा? जल्दी बता दो. It could be was in the place of verb. It would be Was. was. ठीक है. क्यों was ही क्यों होगा आंसर? Because of the noun. हाँ, exactly. So nearest subject rule. We are following here nearest subject rule. Nearest subject rule. So what does it mean? It means अगर कोई sentence आपको either or, ठीक है, या फिर neither nor से हम sentence बनाते हैं. So what does it mean? Neither या फिर nor. So then the verb will be used as per the second subject or the nearest subject of the verb. Got it? So in this case, what we are doing? So we have to use was. ठीक है? तो यहाँ पे was यूज करेंगे हम वर्क की प्लेस पर. Is it clear? चलिए देखते चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. चलो बताओ. Select the sentence that has a grammatical error. So find out the error part. Fourth one. हाँ, तो क्या हो सकता है इसका आंसर? He works as a software developer. तो कैसे काम करता है? एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह वो काम करता है. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं. She always eats healthy meal. या फिर the sun rises in the east. We watches movies every Friday. So what is wrong? Watches. Grammatical error. We watches. Exactly. So fourth question lies, fourth point lies in error. ठीक है, तो करना क्या है इसमें? B के साथ ये बताओ आप परमानेंट साइज यूज करोगे क्या? नहीं होगा ना. तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि it should be watch, not watches. क्या होगा? Watch. Because when we use the plural subject, so there is no need to use s, with the verb. Is it clear? Got it? हाँ.
Sure, you can. No problem. Now listen. Select the most appropriate synonym of the underlined word. So in this sentence, what is the underlined word? So I am doing it. Okay, if it is not underlined, so I am doing it. So what will be the synonym Perceive. of this word? Perceive. Perceive. Okay, so the perceive would be the correct answer. Why? So because ignore cannot be fit in the blank. I mean, cannot be the synonym of this word. Okay? Same as confused and fabricated. So these are similar words. Okay? So that is why the only answer that is left here, that is perceive. Okay? Got it? Sure. Is it clear? Now, Sir, huh. इसका meaning पूरा Listen. So perceive means like to accept. Perceive. Same as this one. Is it clear? Now tell me, the following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. So just we have to find out the error part. ठीक है? बताते जाओ. Several days now. Several days now. ठीक है. देखते चलते हैं अपन लोग. देखो लोग आते जाते रहते हैं. तो आगे बढ़े. ठीक है. So the workers had been repairing the mall road in town for several days now. तो भाई यहाँ पे सीधी सी बात है कि several days now तो होगा नहीं, ठीक है? तो the error lies in part. तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन बनेगा वो फर्स्ट ऑप्शन, मतलब एरर आपको कहाँ पड़ेगा? फर्स्ट ऑप्शन में ही आपका एरर है, ठीक है? So this is the error, ठीक है? There is no need to use several days. Is it clear? Clear. So now next. Look at the next question. Question number 17. Select the most appropriate synonym of the given word. Ecstatic, happy, shocked, or interested. What will be the correct answer? Happy. So here the correct answer, ecstasy means the extreme happiness. ठीक है? So whenever you will talk about the happiness, so this will be the correct answer. Ecstasy means Happiness. happiness. So ecstatic is an adjective, the same as happy will be the correct answer. Is it clear? ठीक. चलिए आगे बढ़ते हैं next. What about the others? Why others are not answering here? Who is this? Hackers Pro. Now listen. The next sentence. Question number 18. So just we have most appropriate synonym of the underlined word. So what will be the correct answer? What is right headline? Which is the underlined word? हाँ क्या आंसर होगा? Which is the underlined word? The project's tight deadline and complex requirement made it a grueling task for the team. Grueling. Challenging. हाँ. So empowering, accessible, challenging और inclusive. Challenging. So आप देख सकते हो इन तीनों वर्ड्स में आपको कुछ सिमिलरिटी दिख रही होगी इसमें इसको छोड़ के, ठीक है? तो ये तीनों सिमिलर टाइप के वर्ड्स हैं, तो बचा क्या हमारे पास? Challenging. Challenging would be the correct answer. Okay? Challenging would be the correct answer. ठीक है? What about the next one? Got it? Now, the next one. Now tell me, right. what will be the correct answer? Right. So Arun Right. writes, ठीक है? So Arun writes his bicycle to school every day. Correct? That is the correct option for speedily चलते हैं हम लोग. समझते हैं आगे देखो.
what does it imply when people say to read between the lines? So what do you understand by these lines? Reading between the lines, what do you understand by this? To skip initial. Exactly. So what is the correct answer? To skip initial and final lines. Exactly. This one would be the correct answer. First one, to avoid detailed information. So then we say try to understand and read between the lines. Means to tell someone, to make someone understand the hidden meaning. Okay? So that is called to read between the lines. मतलब directly हम किसी को नहीं बता रहे हैं, बस ऐसा समझने की कोशिश करो. So this is called reading between the lines. हाँ. So now we have the next one. Next question. I am watching everyone's comment. ठीक है. So ये हमारा हो गया है. Now, what about this closed test? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बैंक में भी मिलेंगे, एसएससी में भी मिलेंगे, सभी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलने वाला है. चलो फटाफट मुझे बताते जाओ इसमें क्या आंसर होगा. Options please. हाँ, ऑप्शंस भी देते जा रहे हैं आपको. So this is the question along with the option. ठीक है. अब यहाँ पे what will be the correct answer in the first sentence, first blank? Refuse to fly. How can I make it correct? Fourth one. हाँ. Refuse to fly. क्या हो सकता है इसका? क्या आंसर होगा बताओ. Fly. फ्लाई होगा. जी. So my next pet Harry was a pigeon. He became convinced that he was not a bird at all and refused to fly. Of course, so fly would be the correct answer. Fourth would be the correct one. Now this is the question 2. So you have to choose the appropriate option for the blank number 2. इसमें बताओ क्या होगा. On. तो बताओ फटाफट क्या आंसर होगा. On. ऑन होगा. ठीक है. कीप आंसरिंग. Correct answer on. Now read the next sentence and tell me the correct answer. We had to stop for either. Either. So listen. However, we had to stop for either you carried him on your shoulder or else. तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हमें सेंटेंस पढ़ के मेरी एक बात समझ आ रही है कि either के साथ जो पेयरिंग है वो किसकी है. और की. Either के साथ जो पेयरिंग होती है वो और की होती है. So that is the reason this would be the correct answer. Got it? चलिए आगे बढ़ते हैं. Next. Now, what about the question 24? Means just you have to fill in the blank number 4. इसको आपको फिल करना पड़ेगा. इसमें आपको आंसर बताना पड़ेगा क्या लाना है इसमें. Pace. Pace. Okay, so pace will be the correct answer. What about? हाँ. Fourth. Pace बोलते speed. Pace मतलब स्पीड. गति उसको बोलते हैं pace. Next. 25. So, what will be the correct answer? You would find him running after you, cooing frantically, his chest pounded out with. You will find him running after you, doing frantically, his What do you have to answer? Indignation. Indignation. Okay? ठीक है. चलिए समझते हैं हम आगे. So यहाँ पे the correct answer would be indignation. इसका मतलब होता है गुस्सा, anger. क्या होता है? गुस्सा और anger. This would be the correct answer.
चलो फिर और क्या। तो बताओ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब समझ आया ना कि व्हाट विल बी द एक्चुअल पैटर्न ऑफ द एमटीएस। अगर आप एमटीएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। पूरा सेशन आप इसमें समझोगे क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है, किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बस ये चीज़ें आपको समझना है। और अगर आपको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप स्टे ट्यून विद द चैनल। तो बाकी ऑफलाइन क्लास भी आप अटेंड कर सकते हो अशोक गवाटे मंडी स्क्वायर पर। बाकी जो नंबर है वो मैं ग्रुप पर शेयर करता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, इंग्लिश एज, ठीक है। तो इस पर क्या होगा कि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। जैसे लाइव क्लास है तो उसका भी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। इंग्लिश एज ये टेलीग्राम पर भी है, यूट्यूब पर भी है और व्हाट्सएप पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी, सब जगह पर आपको इंग्लिश एज मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं ताकि बीच बीच में आपको क्वेश्चंस मिलते रहें और ऑफलाइन क्लास अटेंड करने के लिए आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स टू ऑल, नेक्स्ट